हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का एक सब टॉपिक दैट इज कॉमन रूट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कम अक्रॉस टू अ सिचुएशन जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉमन रूट की बात होगी। सो आई स्टार्ट विद these two quadratic equations and we are to deal with कि इन दो इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है। सो लेट द कॉमन रूट बी अल्फा. So if alpha is the common root that will satisfy both the equations, a alpha square plus b alpha plus c is 0, p alpha square plus q alpha plus r is 0, and to get rid of the alpha we use the elimination process जो कि सभी को पता है. That is we write alpha square alpha 1 second term का coefficient that is p and q, third term का coefficient c and r, first term का coefficient a p and again second term का coefficient p q. So we write alpha square by इन दोनों की multiplication minus of इनकी multiplication, so it's br minus qc is same as alpha upon इनकी multiplication minus इनकी multiplication cp minus ar, it is same as 1 by इनकी multiplication minus इनकी multiplication, that is aq minus pb. So if I equate these two I get the value of alpha. Alpha is cp minus ar by aq minus pb. If I equate these two, I get the value of alpha square as br minus qc by aq minus pb. Now to eliminate alpha, I place the value of alpha in this. So we get cp minus ar by aq minus pb, this thing square is same as br minus qc by aq minus pb. So this factor in the denominator, एक factor हम यहाँ से cancel कर देते हैं. So we get the condition that is cp minus ar whole square. It is same as एक factor यहाँ पर बचा that is aq minus pb और एक factor ये पड़ा हुआ है that is br minus qc. So this is the required condition which is in terms of the coefficients की टर्म्स में हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर कॉमन रूट है so this condition is to be true. Now this condition is easy to remember. It can be observed हमारे पास पहली इक्वेशन थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन थी पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0. अगर हम इसके कॉफिशेंट्स पिक कर लें ए बी सी पी क्यू आर, सो द कंडीशन इज फर्स्ट फैक्टर इज सी पी माइनस ए आर. सो आई से दिस bigger cross a into r minus this square, so ar minus pc square. देखिए यहाँ पर ar minus pc square ही है सेम फैक्टर. it is equal to the product of the smaller crosses. ये smaller crosses हमारे पास ये दो possibilities बनती हैं. so यहाँ पर जो सेकेंड फैक्टर है इट इज ए क्यू माइनस पी बी. देखिए ए क्यू माइनस पी बी, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर इज बी आर माइनस क्यू सी. इट इज पी इंटू आर माइनस क्यू इंटू सी. So this condition is easy to remember. If we write the coefficients, I can say the bigger cross square
This pink one is the bigger cross square. It is same as the product of the smaller crosses. Just remember the orientation. इस डायरेक्शन में वी आर हैविंग द प्लस साइन एंड इस डायरेक्शन में जो क्रॉस कंसिडर किया जा रहा है उसके साथ नेगेटिव साइन इज देयर. सो वी अराइव टू अ कंडीशन जहां पर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है. Now what was the condition when the two quadratics have both roots in common? If I take the two quadratics as ax square plus bx plus c is equal to 0, second is bx square plus qx plus r is equal to 0, अगर इसके दोनों roots common हैं, let the roots be alpha and beta. Here the roots are again alpha and beta. If both the roots are common, then we can say alpha plus beta from the first equation is minus b by a, and alpha beta product of roots from the first is c by a. Alpha plus beta from the second equation, it is minus p upon a, that is minus q by p, and alpha beta from the second equation, इनका product alpha into beta is r by p. So we can say that minus p by a is same as minus q by p, and c by a is same as r by p. Or I can say ये negative sign cancel कर देते हैं. So from here we get a upon p, that is same as b, इस q को इधर shift कर देते हैं, b by q, एंड a अपॉन p की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो a इस साइड भेज दो, a by p किसके बराबर है, c by r. So this turns out to be c by r. So the condition is a by p is equal to b by q is equal to c by r. That means their coefficients जो हैं, this a by p is same as b by q is same as c by r. इनकी रेशो सेम होगी if the two quadratics have both the roots in common. Now, while dealing with the common roots of two quadratic equations, important to remember, अगर दो quadratic equations हैं जिनका real coefficients हैं और उसका non real complex root है, then both the roots will be common. If there are two quadratics with real coefficients and having a non-real complex root common, then both the roots will be common as the complex roots occur in conjugate pairs. Secondly, if two quadratic equations with rational coefficients have a common irrational root, अगर एक कॉमन इरेशनल रूट p प्लस रूट q टाइप है, तो जो उसका दूसरा रूट होगा वो भी कॉमन रहेगा एज irrational roots also occur in pairs. कंडीशन ध्यान रखने वाली चीज तभी ट्रू है जब रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे. ऊपर वाली कंडीशन कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स ओनली when the two quadratic equations have real coefficients. कंडीशन का हम इस तरीके से यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में कि अगर ये दो क्वाड्रेटिक हैं जिनमें ए बी सी पी क्यू आर आर रियल नंबर and if the condition given to us is alpha plus iota beta is a common root of these two quadratic, then as the coefficients are real numbers, then alpha minus iota beta will be the other root common. So इस केस में हमारे दोनों के दोनों roots common रहेंगे. Same thing for the second one, but condition over there is if they have the rational coefficients, then both roots will be common. Now, इनके basis के ऊपर
Let's check some of the problems. First situation given is, if this equation and this equation have a common root, then find k. To deal with this type of situation, first way is we write the coefficients 1, minus 3, 2. Over here the coefficients 1, negative of 2k plus 1, and coefficient over here is k. Condition to have a common root, we already generated that bigger cross square, that is k minus 2 whole square. It is same as the product of the smaller crosses. Just remember the orientation in दोनों की multiplication, that is minus 2k plus 1, minus of इन दोनों का product, तो it is minus of minus 3. This will be same as इन दोनों की multiplication minus of इन दोनों की multiplication, that is minus 3k. यहाँ minus minus plus, तो it will be plus 2k plus 1 into 2. So this gives us k minus 2 whole square left hand side. It is same as over here, it is 3 minus 2k minus 1. So this is the first factor, and the second factor here it is 4k, it is 3k over here, so we get k, और यहाँ से बचा 2. और इस कंडीशन से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो. इट्स अ क्वाड्रेटिक. k की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो, आपको k की वैल्यूज मिल जाएंगी. The values of k turns out to be either 2 by 3 or 0. So यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमने सिंगल स्टेटमेंट में कॉमन रूट की कंडीशन लगाई और जो पैरामीटर k था वो हमने इवेल्युएट कर लिया. Another way to solve, we can say if these two quadratics have a common root, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके तो रूट्स डायरेक्टली दिख रहे हैं. सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक को. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 इज द रूट. नाउ इफ x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, आई कैन से ये कॉमन रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. सो 1 माइनस 2k प्लस 1 इंटू 1, x is replaced by 1 plus k is equal to 0. And if this is the common root, so just replace x by 2, we get 4 minus 2k plus 1 into 2 plus k is equal to 0. One value of k यहाँ से हमें मिल गई, दूसरी value of k हमें यहाँ से मिल गई. So choice is yours. Condition for common root डायरेक्टली लगाई जा सकती है. ये भी प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, तो जैसे आपका मन चाहे आप डील कर सकते हो. Now a situation is given that if these two have a common root, write the least value of a plus b plus c. It's given a, b, c are natural numbers. देखिए यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो इन दो इक्वेशंस के कॉमन रूट की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन के रूट्स तो निकालने हमें आते हैं. We just find the roots. X is given by minus b plus minus under root of b square, that is 9 minus 4 into a into c by 2a. You just check the discriminant. Discriminant turns out to be, it is 9 minus 32. That is a negative quantity. That means this equation has imaginary roots. Now as the equation number first has both roots imaginary and हमें ये condition दे रखी है these two have a common root, that means जो इसका दूसरा root होगा वो भी इसके साथ common होगा. Complex roots occur in pairs
and also ABC are natural numbers. हमारी condition थी if ABC are real numbers then complex roots occur in pairs. So if these two equations have one root in common, then the other root will also be the common one. So in that case, we write that the ratio a by 2, that will be same as b by 3, that will be same as c by 4. Let it be equal to say lambda. So a is 2 lambda, b is 3 lambda, c is 4 lambda. We are to write the least value of a plus b plus c. So in that case, a plus b plus c turns out to be 9 lambda, and a, b and c are natural numbers. So to get the minimum value of a plus b plus c, हमें ये कंडीशन दे रखी है a b c आर नेचुरल नंबर्स. अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, और राइट हैंड साइड की सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल कब होगी? व्हेन लैम्डा इज 1, एज दिस मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. सो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास इसकी लीस्ट वैल्यू रहेगी, दैट इज a plus b plus c. The minimum value will be 9. So in this problem, important process to be note down over here is when discriminant is negative, complex roots occur in pairs when the coefficients are real numbers. So काफी बार इस प्रॉब्लम का यूज करते हुए क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन मेंस एग्जाम. सो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको दिख रहे हैं तो विदाउट ऑब्जर्विंग द रूट्स आप डायरेक्टली कॉमन रूट्स की कंडीशन नहीं लगाओगे. रूट्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड, चेक द रूट्स हाउ दे लुक लाइक. नाउ हमें इस सिचुएशन से डील करना है. द इक्वेशंस, these two have two common roots, then find the value of a plus b. देखिए दो कॉमन रूट्स की कंडीशन हमने डिस्कस करी, एक रूट कॉमन या दो रूट कॉमन जब दोनों क्वाड्रेटिक हो. यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों के दो रूट्स कॉमन है. सो हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस प्रॉब्लम? देखिए अगर दो रूट्स कॉमन है और एक क्यूबिक इक्वेशन तो फिक्स है, तो इस क्यूबिक के रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. To find the roots of this cubic, one of the root can be found with hit and trial process. X is equal to 1 satisfies this equation, so x minus 1 is the factor of this. As x minus 1 is the factor, तो second आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए फैक्टर्स जनरेट कर सकते हो. The second factor, quadratic factor, will be x square minus x plus 1 is equal to 0. So हम पहली इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. जो ये पहली इक्वेशन है यहाँ पर इसके रूट्स आ चुके हैं x is equal to 1, एंड इस इक्वेशन के रूट्स दैट इज x is given by minus b, that is plus 1 plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, that turns out to be 1 plus minus root 3 iota by 2. And if we talk about these two roots, 1 plus root 3 iota by 2 and 1 minus root 3 iota by 2, ये जो दोनों रूट्स हैं these are basically the negative of omega complex cube roots of unity.
omega was -1 plus root 3 iota by 2. Omega square is -1 minus root 3 iota by 2. तो आप देख सकते हो इसका ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है. सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू ओमेगा एंड द सेकेंड रूट इज ओमेगा स्क्वायर. फर्स्ट रूट हमारे पास है 1, दो रूट्स बाकी के आए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, बट विद अ नेगेटिव साइन. यहाँ पर जो रूट्स हैं, ओमेगा इज दिस, ओमेगा का ये नेगेटिव है. सो आई शुड राइट रूट्स आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. इसका नेगेटिव ये है. Now, according to the condition, these two have two roots in common. If these two have two roots in common, if we observe this equation, this is a quadratic in x. और x में quadratic है तो या तो इसके दोनों roots real होंगे या फिर इसके दोनों roots imaginary होंगे. Now, since they have two roots in common, we can say that minus omega and minus omega square, ये जो दो roots हैं, these are the common roots. Now, as माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर ही इसके साथ कॉमन रूट्स रहेंगे, सो वी से दैट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो a इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर plus b into minus omega plus a, that is 0. So we get a omega square minus b omega plus a is 0. Now, as we know, 1 plus omega square is 0. Sum of cube roots of unity is 0. So a common from these two, we have 1 plus omega square minus b omega as it is. This is 0. So a into, we can write this thing as 1 plus omega square is minus omega. Minus b omega is 0. So minus omega common, a plus b is 0, as this thing is non-zero and the product of these two is 0. It's only possible when a plus b is 0. So यहाँ से हमारे पास a plus b की वैल्यू आ गई. Now important step to be remembered over here. Again हमने उसी चीज का यूज किया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर्स. इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन हैं इसके साथ, तो दोनों रूट्स कौन से रहे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इन दिस केस. और जैसे ही हमने इन रूट्स को रिप्लेस किया, हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई. सो इस एग्जांपल में हमने ये चेक किया कि एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक के अगर दो रूट कॉमन हैं, हाउ वी कैन check the two common roots between these two. Now, एक नेक्स्ट सिचुएशन से डील करते हैं. हमें यहाँ पर गिवन है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस is thrice the root of the equation, second equation, find the relation between the coefficients. Now, relation between the coefficients फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन है, इसका एक रूट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो थ्राइस है एज कंपेयर टू द रूट वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. So if I consider alpha to be the root of this equation, then thrice of alpha will be the root of this equation. So p alpha square plus q alpha plus r will be 0, as alpha satisfies this equation, as alpha is the root. And if I replace 3 alpha in this equation, ये इसको satisfy करेगा, तो a into 9 alpha square
प्लस बी इंटू 3 अल्फा प्लस सी इज 0। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई 9a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस सी इज 0। सेकेंड कंडीशन इज p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस r इज 0। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पर अल्फा इज द कॉमन रूट दो इक्वेशंस। So if we use the short technique, that is bigger cross square is same as the product of the smaller two crosses. So we are going to write this is the bigger cross. So I write 9a into r minus p into c. The square is same as the smaller crosses. These two are the smaller crosses. So it is equal to the product of these two smaller crosses. So it is 9a into q. Just remember the orientation, this side positive, minus 3b into p. And the second smaller cross, it is 3b into r minus q into c. So this is the required relation, जो हमारा coefficients के बीच में relation है a b c and p q r. The relation in between these all is given by this. So this is just again the direct application for the common root. चलिए अब इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसकी एप्लीकेशन कैसे रहती है। एक सिचुएशन हमें गिवन है, इफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हैज वन प्योरली रियल रूट, then find relation between a b and c. So फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो कोफिशिएंट्स हैं a b और c, that are not on the set of real numbers, these are the complex numbers. And secondly, the condition given is this has purely real root. So अगर हम इस इक्वेशन में इस कंडीशन का यूज करें, दिस हैज अ प्योरली रियल रूट, so I take let z is equal to alpha that is real is a root of this equation. So we say that a z square plus bz plus c is equal to 0 को ये root satisfy करेगा, as this is the root. So a alpha square plus b alpha plus c is 0. यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डील करने के लिए, सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर कॉन्जुगेट दोनों साइड लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन डेवलप हो जाती है। सो इफ आई टेक द कॉन्जुगेट दैट इज ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, इस पूरे का कॉन्जुगेट दैट विल बी सेम एज 0 का कॉन्जुगेट दैट इज 0. So we say that it is a conjugate z conjugate square plus b conjugate z conjugate plus c conjugate that is 0. So this is a conjugate z conjugate, यहाँ पर क्या है, as z is equal to alpha is a real root, purely real, तो z conjugate भी अल्फा रहेगा, as z is equal to alpha is real. So
z कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट वो अल्फा ही होगा. So we can say it is a conjugate, z conjugate, that is alpha का conjugate, that is alpha square, plus b conjugate alpha over here plus c conjugate is equal to 0. तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है. सो एक इक्वेशन है हमारे पास a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a कॉन्जुगेट अल्फा स्क्वायर plus b conjugate alpha plus c conjugate is 0. Now to eliminate alpha from here, as we are to form a relation between a, b and c. Alpha को eliminate करने के लिए we again use the cross method. Bigger cross square, that is a into c conjugate minus a conjugate into c, the square is same as the smaller crosses. These two are the smaller crosses, first one, and this is the second one. So this is equal to a into b conjugate minus a conjugate into b multiplied by second cross, that is b into c conjugate minus b conjugate into c. So this turns out to be the condition in terms of a, b and c. So here you can observe कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सिचुएशन को डील करने के लिए हमने ये एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज कर लिया. सिमिलरली सपोज हमारे पास सिचुएशन होती यहाँ पर इफ दिस इज इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हैज वन प्योरली इमेजिनरी रूट. इस रियल रूट की जगह हमारे पास कंडीशन होती है कि इमेजिनरी रूट है. So we can start, if purely imaginary root is there, so z will be looking like alpha times iota, purely imaginary. So same situation से हम इसको डील कर सकते हैं जैसे हमने रियल रूट के लिए किया. z इज इक्वल टू अल्फा आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी रूट. सो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इक्वेशन है ए जेड स्क्र प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा a z स्क्वायर, that is alpha square iota square plus b z, b alpha iota plus c is 0. As iota square is minus 1, we get minus a alpha square plus b alpha iota plus c is 0. And you can form the second condition as we did by taking its conjugate. और जब हमारे पास सेकेंड कंडीशन होगी तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से रिलेशन ए बी और सी की टर्म्स में इवेल्युएट कर पाएंगे. नाउ कॉमन रूट्स की कंडीशन का हम यूज टॉपिक स्ट्रेट लाइंस में भी करते हैं. अब स्ट्रेट लाइंस में ये कंडीशन का यूज कैसे रहता है, उसके लिए वी जस्ट कंसिडर, हमें एक सिचुएशन गिवन है जिसमें ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू वाई स्क्र प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 have one linear factor in common. Then find the relation among the coefficients. यहाँ पर अगर हम बात करें ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy plus by square is equal to 0. This represents the pair of lines passing through origin. Now the equation number first and the equation number second given is of this form. So basically ये दोनों की दोनों क्या है, pair of lines passing through a region, and
they have one linear factor in common. अगर एक linear factor इनका common है, that means one of the line is coincident. एक line जो इस combined equation में present है, वही same line इस combined equation में present है, second वाली में. तो ये जो लीनियर फैक्टर की बात हो रही है, जो लीनियर फैक्टर कॉमन है दोनों लाइंस में, उसको हम मान लेते हैं द लीनियर फैक्टर इज y इज इक्वल टू mx इज द कॉमन लीनियर फैक्टर. So if this is the common linear factor, so we can write this equation as, जो फर्स्ट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy इज इक्वल टू 0, अगर हम इस इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो इट इज a प्लस b y बाय x का स्क्वायर प्लस c इट इज y बाय x इज इक्वल टू 0, एंड दिस कैन बी सीन एज, दिस एम्प्लाइज जो हमारा लीनियर फैक्टर कॉमन है, इट इज y इज इक्वल टू mx, सो वी कैन से y अपॉन x इज m ओवर हियर. तो y बाई एक्स की जगह हम m रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस बी एम स्क्र प्लस सी एम इज इक्वल टू 0. तो एक हमारे पास m में क्वाड्रेटिक जो नजर आती है, बी एम स्क्र प्लस सी एम प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इज वन क्वाड्रेटिक इन m. सिमिलरली ये जो फैक्टर है, इट इज कॉमन टू द सेकेंड इक्वेशन एज वेल. सो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को इसी फॉर्म से चेंज कर लें, that is px square plus qy square plus rxy is equal to 0, dividing by x square, so it is p plus q y by x square plus r y by x is equal to 0. So it is of the form q, this is m square plus r m plus p is equal to 0. This is our second equation. नाउ इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में एक m की वैल्यू इज कॉमन, एज दिस इज द कॉमन लीनियर फैक्टर. सो टू इवेल्युएट द रिलेशन among the coefficients, we say that these two equations have the common root, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू m की कॉमन रहेगी, और अगर इनमें कॉमन रूट है, सो आई राइट द कंडीशन. फर्स्ट है बी एम स्क्र प्लस सी एम प्लस ए इज 0, सेकेंड इज क्यू एम स्क्र प्लस आर एम प्लस पी इज 0. सो टू एलिमिनेट m, we write bigger cross square again, that is bp minus qa whole square. It is same as the product of smaller two crosses, first cross, second cross. So it is same as b r minus from here qc and cp minus ra. सो ये जो कंडीशन आई हमारे पास, ये कंडीशन आ चुकी है इन कोफिशिएंट्स के बीच में when we have one linear factor in common. सो ये जो कॉमन रूट्स का प्रोसेस है, वो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी यूज होता है. नाउ इफ आई चेंज दिस सिचुएशन अ लिटिल बिट, सपोज मैं बात करता हूं यहाँ पर कि जो दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन हमें गिवन थी, दैट वाज फर्स्ट दिस इक्वेशन, एंड दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन यहाँ पर गिवन थी, दिस वाज सेकंड इक्वेशन. अगर मैं कहता कि एक लाइन जो इसकी इंडिपेंडेंट लाइन है, एक लाइन y is equal to mx is the independent equation of the line whose joint equation is this, and second line
y इज इक्वल टू, जो सेकेंड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वो लाइन इस इक्वेशन की एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू, इफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन तो उसकी स्लोप होगी -1/m इंटू एक्स। सो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन is perpendicular to one of the line of the second equation, we are to form the relation among the coefficients again. So इस केस को डील करने के लिए we follow the same process. यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी as we did over here, that is b, हम इक्वेशन यहीं से पिक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद b y बाई एम स्क्वायर प्लस सी y बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास ये है, दैट इज q y बाई एक्स, हियर इट इज x, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज r y बाई एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो y बाई एक्स है, ये y बाई एक्स की वैल्यू वी विल बी रिप्लेसिंग, दिस इम्प्लाइज यहाँ से y बाई एक्स इज m। सो यहाँ पर हम y बाई एक्स की वैल्यू m रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हमें दिखेगी बी एम स्क्र प्लस सी एम प्लस ए इज 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड इन दिस सेकेंड इक्वेशन y by x is to be replaced by, here we can say y by x is -1 by m. So इसमें हम y by x को -1 by m से रिप्लेस करते हैं तो q इंटू -1 by m स्क्वायर प्लस r इंटू -1 by m प्लस p इज 0। सो हमारे पास एक कंडीशन ये आती है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये बन जाती है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें, सो इट इज q माइनस आर एम प्लस पी एम स्क्र इज 0। सो दिस इज आर one of the condition and this is our second condition. Now to find the relation between the coefficients, we see that first equation is this one, that is bm square plus cm plus a is 0. Second equation reduces to this, it is pm square minus rm plus q is equal to 0। और इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड अगेन ये सेम प्रोसेस यूज करते हुए we can write down the condition in a b and c। so m की कॉमन वैल्यू के लिए जो हमारे पास कंडीशन थी कि this has one linear factor in common, that was our first case, and in the second case we developed the relation when we have one of the factor of line 1 is perpendicular to the one of the line in second equation। so आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी यूज किया जा सकता है, ये स्ट्रेट लाइंस में भी यूज हो रहा है। सो इट्स अ कंबाइंड कॉन्सेप्ट, कैन बी यूज्ड विद द टॉपिक्स। सो एक रिलेशन जो हमने कॉमन रूट्स का निकाला वो जगह जगह पर हमारा काम आ रहा है।